Hello everyone. This question appears in class 6th NCERT chapter of fractions. This is ninth question of its exercise 7.6. So the question says that Jaydev takes 2 and 1/5 minutes to walk across the school ground. Rahul takes 7 by 4 minutes to do the same. Who takes less time and by what fraction? So हमारे पास है जयदेव and Rahul. So जयदेव 2 and 1/5 मिनट में स्कूल का एक ग्राउंड कंप्लीट करता है, वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड, एंड राहुल टेक्स 7/4 मिनट. सो हमें कंपेयर करना है हु टेक्स लेस टाइम. सो बस जयदेव के लिए गिवन है 2 and 1/5 एंड राहुल टेक्स 7/4 मिनट्स. सो इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. 5 into 2 10 plus 1 is equal to 11/5 and 7/4. सो यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है. सो कंपेयर करने के लिए हम फर्स्टली इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. सो इंटू 4/4 इंटू 5/5 ये हो जाएगा हमारे पास 4 11 4 44 अपॉन 20 एंड 7 5 35 अपॉन 20. सो 4 डिनोमिनेटर सेम है, सो 44 इज ग्रेटर देन 35. So Jaydev takes more time. In other words, Rahul takes less time to walk across the school ground. So in our purpose, so Rahul takes less time than Jaydev to walk across the school ground. Then by what fraction? So हम difference find out कर लेंगे. Difference is equal to 44/20 minus 35/20. सो डिनोमिनेटर सेम है, सो न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली सेपरेट कर लेंगे. सो ये हमारे पास 9/20 minutes. So Rahul takes 9/20 minutes less than Jaydev to walk across the school ground. Thank you.